Hello friend, welcome back to Medical Flora. Today we are going to discuss the topic fever, but in this lecture we are not going to directly discuss the fever, but it will be discussed on a clinical approach. As we move to the clinical posting in the medicine OPD, so we are very often exposed to the patient of fever. Therefore, the fever is very common type of diagnosis that is made by the doctor in the medicine OPD. So, without wasting time, let's begin the lecture. In case of fever, there are a few important attributes that can be remembered through a little mnemonic, that is the total fire. T for temperature, O for onset, and T for time frame, F for fluctuation, R for rigor and resolution. So now coming to the first attribution, that is the temperature. So actually, as we all know, our body temperature is lies between 98 Fahrenheit to 99 Fahrenheit. तो बेसिकली देखा जाए तो 99 से 99 फ़ारेनहाइट के बीच में हमारा बॉडी टेम्परेचर लाइक करता है सेंटीग्रेड में ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो ये डेली फ्लक्चुएशन के बेसिस पे होता है 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट और पीक इसका पीक लेवल जो होता है 6 पीएम से लेकर मतलब 6 पीएम से लेकर 10 पीएम तक मतलब 6 बजे से 10 बजे तक इसका पीक फ्लक्चुएशन होता है। तो नाउ कमिंग टू द next question, that is the variation of temperature in the body. If the temperature is more than 99 but less than 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर इस बीच में रहे तो इसको पायरेक्सिया बोला जाएगा और लेकिन इससे ज़्यादा हो गया तो हाइपर पायरेक्सिया बोलेगा जो कि सर्टेन कंडीशन में होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे जैसे कि मलेरिया सेप्टिसेमिया एंड हीट शॉक and if the temperature is lies between the 98 degree Fahrenheit to 95 degree Fahrenheit, then it will be known as subnormal. But if it is further less than the 95 degree Fahrenheit, then it will be considered the hypothermia. And hypothermia will be in case of the myxedema coma, hypoglycemia, and blood loss. So coming to the next attribute, that is the onset. तो ऑनसेट पे मोटे मोटे हम क्या देखते हैं तो ऑनसेट मतलब कब हुआ कैसे हुआ मतलब कितना जल्दी हुआ या ग्रेजुअली हुआ या सडनली हुआ तो there will be discussed abrupt and the gradual. So in case the abrupt, it is the condition the individual is getting sudden onset of the fever. So it will be it may be caused by the Escherichia coli pyelosis and the pneumonia. And in case of the gradual parameter, it will be malaria, tuberculosis, and the typhoid. So there are few importance here. One most important point is that the stepladder pyrexia. So what is stepladder pyrexia? It is the characteristic features of the typhoid. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैगा में या उस एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है तो stepladder features of typhoid indicate that there is a gradual increment of the body temperature like 101 degree Fahrenheit one from 100 degree Fahrenheit to 101 and next day 102 next 103. It is also known as the staircase phenomena. Okay, we have covered number one, that is the temperature, and the number two onset. Coming to the next part, it is the time frame. So under the heading of the time frame, we will be discussing two subheading, that is the alternating and the relapsing. तो alternating क्या है और relapsing क्या है तो first we are interested to discuss about the relapsing. तो मेजर डिफरेंस रिलैप्सिंग और अल्टरनेटिंग में ये है ये मेटर्स ऑफ डे तो ये मेजरमेंट जैसे होता है तो दिन में मेजरमेंट होता है जैसे कि पहले दिन में बुखार आया सेकेंड दिन इज नॉट तीसरा दिन में आया चौथे दिन में नहीं आया और फिफ्थ डेज में आ गया तो इसमें रिलैप्सिंग ये रिलैप्सिंग की कैटेगरी में आएगा जैसे कि ये डे में मेजर हुआ ना तो अगर ये वीक और मंथ में मेजर होने शुरू हुआ तो इसमें इसको अल्टरनेटिंग बोला जाएगा और अल्टरनेटिंग के अंडर भी
दो आता है, जैसे कि रेगुलर अल्टरनेशन एंड द इरेगुलर अल्टरनेशन। तो रेगुलर अल्टरनेशन में क्या हुआ, सपोज किसी इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम फीवर 7 डेज से 10 डेज तक पीक में आया और कम हो गया, और फिर 7 to 10 डेज इसको बुखार नहीं हुआ, और फिर 7 to 10 या उस दिन में आ गया, तो ये रेगुलर अल्टरनेशन में आएगा। लेकिन व्हाट विल बी इन केस ऑफ द इरेगुलर अल्टरनेशन, सपोज किसी इंडिविजुअल को 3 दिन तक रहा बुखार, उसके बाद 10 दिन तक गायब हो गया, बुखार नहीं है, उसके बाद 6 दिन तक आया और 2 दिन तक नहीं आया, तो इधर मतलब इरेगुलर वेरिंग हो रहा है, मतलब वेरिंग ऑफ द फीवर इन इरेगुलर मैनर। So here also one important term is defined for the regular alternation of the fever, that is the pale abstain fever. In case of the lymphoma or thin, it is important to remember that. And in case of the tuberculosis, we have covered the third parameter also, that is the time frame. Now coming to the next parameter, that is the fluctuation of the variation. So before coming to the theoretical question, we are going to discuss this graph. तो इस ग्राफ में क्या हुआ है, सपोज ये बेसलाइन है बॉडी टेम्परेचर का 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एक ब्लैक कलर में दिखाया गया, मतलब इस ग्राफ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक पोर्शन शो कर रहा है बेसलाइन को टच करके, और ये जो ब्लू और रेड है, ब्लू और रेड, ये देखिए बेसलाइन को टच नहीं कर रहा है, ये ऊपर ऊपर से जा रहा है। लेकिन इसका वेरिएशन कम है टेम्परेचर वेरिएशन, बट इसका वेरिएशन ज्यादा है। जैसे कि इसमें देखा जाए तो 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसका वेरिएशन लेस देन 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका वेरिएशन मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको ही थ्योरी में कन्वर्ट किया गया। तो देखिए, टचिंग द बेसलाइन, इट मे बी द intermittent fever, and further tertian fever, quadrant fevers, and the quadrician fevers. So in case of tertian fever, there will be fever in the first day, the second day is gap. There will be fever on the third day and the fourth day will be gap. तो अल्टरनेशन मतलब एक दिन बाद बता रहा है। And temperature variation, the temperature variation is after 1 day, after 1 day. And if there is gap of 2 days, then it will be under the category of the quadrants. And if the fever is occurring daily, suppose it is occurring daily, हर दिन हो रहा है, but the temperature variation is in between every day, हर दिन हो रहा है लेकिन टेम्परेचर वेरिएशन दिन के अंदर ही हो रहा है, सपोज इन केस ऑफ द सेप्टिसिमिया में ये देखने को मिलता है। तो नाउ कमिंग टू द नॉन टचिंग बेसलाइन, तो जो ग्राफ बेसलाइन को टच नहीं कर रहा था, तो एक है ब्लू जो कंटिन्यूअस है, और एक है रेड जिसका वेरिएशन ज्यादा है, मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको बोलता है रिमिटेंट। तो याद रखना, एक है कॉन्टिन्यूअस, एक है रिमिटेंट, अंडर द कैटेगरी ऑफ द नॉट टचिंग बेसलाइन फ्लक्चुएशन। तो अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट frequently used term, that is the hectic temperature. So what is hectic temperature? It may be asked in the Viva. So it is the most severe form of the intermediate fever. देखिए, इधर टेम्परेचर वेरिएशन मोर देन 5 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा रात में, और बेसलाइन दिन में बेसलाइन को टच करेगा, बट इट विल बी accompanied with स्वेटिंग। तो जब बेसलाइन टच करेगा तब इंडिविजुअल विल बी स्वेट। In case of tuberculosis and the septicemia, this can be seen. Okay, now coming to the next question, that is the rigor due to the constriction of the vessels. So rigor, what is rigor? This is it's a condition which is occurred due to the constriction of the skin vessels. So basically, this is a triangle to show the three parameters. That is the parasitic infestation in case of the malaria infection, and the Escherichia coli, and this is the transfusion of the blood, and the infusion of the antibiotic
पायरेटिक ड्रग्स, एस्पिरिन। तो इसको इंजेक्ट करने के बाद राइगोट देखने को मिल सकता है। तो as we have discussed much about the fever, so now coming to the next and the final dimension of the attribute of the fever, that is the resolution. This can be by two methods, there is the crisis and the lysis. तो ये crisis, what is crisis and the lysis? ये देखिए basis, crisis is generally the speedy recovery of the इंडिविजुअल फ्रॉम द फीवर विद इन 6 to 12 आवर्स। मतलब 6 से 12 घंटे के अंदर किसी इंडिविजुअल का बुखार का अगर कम कर दिया जाए तो वो मतलब क्राइसिस के अंडर में आ जाएगा। ये कैसे किया जाता है? आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक और द एंटीबायोटिक जल्दी खत्म हो जाता है। बट व्हाट विल इन द केस ऑफ लाइसिस ओवर द फ्यू डेज। तो ओवर द फ्यू डेज मतलब क्या है? सपोज किसी इंडिविजुअल का फीवर हुआ, 5 6 दिन चला गया, 6 डे 7 डेज 8 डे ग्रेजुअली इसको डिक्रीज होने को मिला बेसलाइन टच के। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि when the if the body is not responding to the drugs, or the drugs has the low potency, or the any reason may be there, and the reason is that in early days when there is no antibiotic and no proper antibiotic drugs. So this shows the lysis phenomenon, and this also responsible for the showing of the phenomena, that is staircase phenomena, that we have discussed earlier on the case of the onset. Sorry, not in yes, in the case of onset, gradual staircase is the characteristic feature of the typhoid. Okay, so it will be showing the staircase phenomena. So मतलब gradually decrease होगा, देखिए coming to the baseline gradually. So these are the few important parameters of the attribution of the fever to be characterized in the medicine OPD to diagnose the patient in a proper manner. So thank you guys. So this data source is recorded from the video lecture from the YouTube. So it's better to read from the book. Okay, thank you. Study well.